and he became approver. He is the second approver. So अब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। प्री इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि ये वर्बल थी। नहीं सर, वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी। वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, उसी पे ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें 693 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये पेज 692 पे। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, बट वेयर इज द ऑर्डर, वेयर इज द सर, वेयर इज द ऑर्डर? सच ऑर्डर इज अवेलेबल। सही है, वो अपना जो नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा। अब 693 पे आ गए, बताइए 3 में क्या है? ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं कुर्बान सादिक इकराम साहब, हमारे जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं। अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी रिटन ऑर्डर entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहे हैं कि I did not come across, but such an order must be in the office of the director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977. No written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है, अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये बड़ी शॉकिंग चीज है। अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो ये है। अब ये चीज, माय लॉर्ड, आई एम क्लियर नाउ। Now I am coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. Sir, the prosecution case in 2 minutes, I will sum up this, is that there was a खत्म कर दें, एक सिर्फ बात है। In the meanwhile, any private complaint was also filed. Yes, sir, sir, sir. Well, I will deal that. I will deal that. अच्छा, you will come there. वो बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ा अच्छा, ठीक। बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी। आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना, फिर बड़ा समराइज कीजिए। 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा। अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज में ये करता हूँ। We have to keep you entertained in your retirement, मंजूर मलिक साहब। I think sir, this is honor for me and this is my duty. I don't think anyone else could have done this this job. बड़े लायक आदमी माशाल्लाह इत्तेज़ाज़ हसन साहब बैठे हैं, अज़हर वानी साहब बैठे हैं। मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर। मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट साइड छोड़ो जी, magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi साहब was very eminent lawyer. अब वो भी डिफेंस साइड पे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने जब भी उन्हें एम्बैरस करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये जजमेंट दिखा लेते। एंड आई रिमेंबर द सिचुएशन 25 ईयर बैक। तो ये आपकी ड्यूटी है। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बातें बता दूंगा, उसको किस तरह डील करना है, इस इम्प्रेशन को कैसे ख़त्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो इट विल बी मोर शॉकिंग। तो अब प्रोसिक्यूशन केस ये है कि देयर वाज ए कंस्पिरेसी sometimes before 74 between late Zulfiqar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director FSF, for assassination of the conspiracy section was incorporated in the charge or no? है चार्ज में तो है, सदा में भी है, चार्ज में भी, FIR में नहीं। अब मैं सर इसको खत्म कर लूँ अगर इजाजत दें तो। जी
अब वो ये था कि जी देयर वाज ए कंस्पिरेसी बिटवीन लेट जुल्फकार, उसका टाइम नहीं दिया गया, बट ऑब्वियसली दैट वाज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एफएसएफ एंड बिफोर मसूद महमूद became the director general of FSF. Aknwas Tuana, Zulfiqar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas, there were three. Conspiracy was to assassinate Ahmad Raza Kasuri Sahab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haknwas Tana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfiqar Ali Bhutto and Mia Abbas. Mia Abbas ordered this Ghulam Hussain to execute this conspiracy. The task was assigned to Mia Ghulam Hussain. Ghulam Hussain arranged Sufi Ghulam Mustafa, from whom they received Sten gun and other weapon, etc. And he also arranged Arshad Iqbal and Iftikhar. These two persons, along with Ghulam Hussain, they were present at the spot. This is prosecution story. And Ghulam Hussain was watching the whole operation. He was controlling the whole operation. And these two young men in their early 20s, they fired at the car. One is Sufi Ghulam Mustafa, the other is? Sufi Ghulam Mustafa is the person who was not present at the spot. His fault was that he provided the ammunition, weapon to these three persons. Ghulam Hussain, Iftikhar, तीसरा क्या है? Arshad. इफ्तिखार एक हो गया, दूसरा Arshad. और दूसरा अरशद है, Arshad. तीसरा गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। अब हुआ ये, अगर आप जनाब रिकॉल करें तो मैंने बताया कि जब फर्स्ट इंटरिम चालान सबमिट किया गया तो इसमें सारे ही मुल्ज़म थे। वो जो थे मसूद महमूद साहब वो भी मुल्ज़म थे, जुल्फिकार अली भुट्टो भी मुल्ज़म थे, और वो दूसरे ये 7 बंदे सारे मुल्ज़म थे। फिर Masood Mahmood became approver. His statement, first his confessional statement was recorded, where he confessed this, that I was part of this conspiracy. Whether or not this is a separate question, I will deal it later on. Thereafter, his statement was recorded when pardon was granted to him under Section 337 Code of Criminal Procedure, and he became approver. He was number one. And then Ghulam Hussain became the approver, who was head of this operation. So these two persons became approver. They were granted pardon. Then they appeared before the court as the witnesses. Those remaining three, they remained stick to their confession. Pardon was granted by the provincial government or the federal government? No, sir, it is always granted by the magistrate. At that time, it was deputy commissioner or anybody authorized by the district magistrate. But at the relevant time, he was additional deputy commissioner. He granted. Sir, so your lordship is asking some question? No question. जिस तरह मसूद महमूद का 164 का भी था और अप्रूवल भी था, इसी तरह गुलाम हुसैन का भी 164 का था। बिल्कुल था। उसका भी था। पहले तो वो मुल्ज़म बने हैं ना, इसीलिए तो वो मुल्ज़म बने। पहले इंटरिम चालान में वो मुल्ज़म इसीलिए बने ना कि उन्होंने, अब फिर बाद में वो अप्रूवर बन गए, स्टेटस चेंज हो गया। अब ये था प्रोसिक्यूशन केस। इसमें जो अबेटमेंट के कंस्पिरेसी के मुल्ज़म थे उनको भी सजाए मौत, और जो एक्ट्रेस के थे उनको भी सजाए मौत। 5 persons were hanged for 1 injury. 5 persons. जिस शख्स को जिसको कत्ल किया गया, इंटेंशन उसको कत्ल करने का नहीं था। सर ये तो ला है ना कि अगर इंटेंशन ए को करने का है और बी हो गया तो वो वही समझा जाएगा कि ए ही हुआ है। वो बहुत क्लियर है, वो 301 क्लियर। अच्छा चले सर, आगे चले जी। Whenever you are tired, let us know. We can take a break. No, I am not. I'm not. I will just ask for a break for the prayer. Whenever you want, we'll break. No, sir. Prayer? और 2 बजे? हाँ 2 बजे। 2 बजे करते हैं। सर
chalan, this now I'm talking of incomplete chalan, as your lordship has said. I will show you the incomplete chalan. It was prepared on before that, no transfer. And if your lordship permit me, may I deal with the transfer of this case? No, I think chalan ke baad hi hua hai. Incomplete chalan was prepared on 11th of September 1977. 11th of September, this reinvestigation started in July, and on 11th of September, incomplete chalan was prepared. And sir, it was submitted in the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. Interim chalan is at page 282 of volume 7. हाँ, वॉल्यूम 7 जनाब देख लें. पेज सर 282. देखना है में ठीक है सर. सर वो आप देख लें कि ये इसमें 7 एक्यूज है ना. देखिए 7 मुलजम है, बाद में कंप्लीट आया तो 5 रह गए. हाँ, वो अगली बात है. बस ये सबमिट हो गया सर. अब ये सबमिट हो रहा है 12th of September 1977, and now the order is at page 3 to 4 of the same volume. ये जरूरी है जी. ये जरा पढ़ लें. ये जरूर सर, ये बड़ा जरूरी है. कौन सा पेज? सर पेज 3 to 4 वॉल्यूम 7. जी जी पढ़िए. ये सर सरकार बनाम, ये उर्दू में है जी, बनाम जुल्फकार अली भुट्टो वगैरह विद इन ब्रैकेट लिखा है 7 कस. ये 7 लोगों के खिलाफ चला. जेर दफा 302, 307, 120B, 109 ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान. नामुकम्मल चलान मुकदमा हाजा आज अदालत पेश हुआ. मुल्ज़मान जुडिशल हवालात में हैं. चलान बाद पड़ताल दर्ज रजिस्टर होकर बदालत जनाब सेशन जज लाहौर भिजवाया जाता है बराए मजीद कार्रवाई, क्योंकि जुर्म जेर दफा ते पे की समात की मुजाज सिर्फ अदालत सेशन है. नो सर, दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेरी. सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जामिन एनीथिंग, दे विल सेंड टू द कोर्ट ऑफ सेशन. इसमें क्या खास बात है? खास मैं ये कर रहा हूँ कि ये 12 तारीख को उसने भेज दिया सेशन कोर्ट को. अब फिर सर मैं आगे चलता हूँ. अच्छा 190 और रिसीव भी हो गया सेशन. जी, रिसीव भी सेम डेट पे हो गया. उसी डेट को ये सेशन कोर्ट को रिसीव होगा, उसी पेज पे, उसी पे. ठीक है सर कुछ नहीं, अगर इजाजत दे. जी मैं जरा आपको थोड़ा सा पुश भी कर रहा हूँ. नहीं पुश, अच्छा ठीक जी बड़ा जरूरी है. 12 तारीख को ये चालान सेशन कोर्ट चला गया. अब दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द लर्नड सेशन जज व्हिच आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स. Received today. PP to check and report by 14th of instant. अब पीपी से पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये वो जज साहब थे. देन ही वाज जज ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एज वेल. ही वाज एट दैट टाइम एंड ही इज अ लाइव सेशन जज. ये सेशन जज कौन? एजाज निसार साहब हमारे. अच्छा. एजाज निसार साहब सेशन जज लाहौर थे. आज भी माशाल्लाह जिंदा हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे. ये उनका ऑर्डर है. अब उसी दिन, अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद उनने कोई ऑर्डर किया इसने सेशन जज साहब? अब उनको मौका ही नहीं मिला. वो क्या, उन्होंने तो एक ऑर्डर किया ना जी, उन्होंने पीपी को भेज दिया. उन्होंने पीपी से कहा कि आप रिपोर्ट करें एग्जामिन करके. ठीक. इट्स नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. ठीक है. So PP has nothing to do with that. That is So he did not exercise his judicial mind on nothing. And PP submitted report of what happened next. That is more important. पीपी से सिर्फ असिस्टेंस मांग रहे थे. वो बहरहाल उनको समझा के चलें, कुछ बता दें क्या. बट मुझे नहीं पता, मैं कमेंट नहीं फर्दर करता इस पे. अब उसी दिन, अब ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ रही है, उसी दिन 12 तारीख है और नेक्स्ट डे पे ये केस हाई कोर्ट ट्रांसफर हो जाता है. इस तरह होता है. ये दिखाएं, ये रिकॉर्ड से दिखाएं. एक सेकंड सर, एक सेकंड. अब मैं जनाब, योर लॉर्डशिप इज हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर मी, बट आई एम I think you are breaking all the ratings of all the TV channels today. क्यों सर?
Sensational. Suspense. वो बात ही You ऐसी है। created suspense. No, it's not suspense, sir. Ji. Your Lordship, We are waiting for the next thing you say. Ji. Volume 7, page 1, sir. Volume 7, Page 1. same volume. Same volume. And I will write to read the caption of this application, the title we call, The State versus Mr. Z.A. Bhutto, etc. So it's very important. Yesterday some lawyer told that said perhaps the application was filed by Kasuri Saab. This application has been filed by the state, etc. Order hai 13/9/1977. In my whole career, sir, as a lawyer, as a judge, I have not seen such a brief order. Which order is it? This one, this just few lines order. जरा पढ़ लें इसको. मैं पढ़ता हूँ. अब देखिए, मिस्टर अनवर, मैसेज अनवर, M.A. रहमान, Ijaz Hussain Batalvi and Farooq Bedar advocate, all for the prosecution. In view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. In view of the submissions, what are those submissions? Nobody knows. Where is the petition? No, it is not on the record. Any notice to the other side? No, no. ये तो अगली बात है जी, पहले तो इसको हजम करें ना जनाब कि ये हुआ क्या है. ये बड़ी पेनफुल आप सिचुएशन. इतने मुरगन ग़िज़ा ना खिलाए क्या हजम ना करें? नहीं आप करेंगे, मैं कहता हूँ ये तो सर बड़ी बातें हैं ना जी. अभी तो और बातें इतनी ज्यादा आएंगी तो बहुत ही मुश्किल हो इसी जाएगा. मौके पे जरा वो प्रोविजन भी बता दीजिए. 26 भी हम पढ़ लेते हैं साथ. सर वो बाद में पढ़ेंगे. पहले मैं एक और बात बता दूं, वो मैंने पढ़नी है, उसके साथ तो बहुत बड़ी बहस है इस इशू पे. ठीक. मलिक साहब इसके ऊपर जो नंबर लिखा है 127T ट्रांसफर ये एप्लीकेशन ट्रांसफर सर टी फॉर और एप्लीकेशन नहीं है. नहीं, एप्लीकेशन है ना जी, एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे नहीं है. नहीं कोर्ट पे नहीं है. होगी. नंबर लगा हुआ है. नंबर जरा इसमें इस पेज पे सफा नंबर 2 पे 2 नंबर हैं. एक है क्रिमिनल ओरिजिनल 60-77. सर वो ये नहीं है, वो अब ऑर्डर आ गए हैं ट्रायल कोर्ट के, जो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई है ना, ये ऑर्डर उसके हैं. ये ट्रांसफर एप्लीकेशन से सिर्फ यही रिलेट करता है, वो उसके नहीं है. ये बेसिकली जो स्टाफ ऑफिस है ना आपका, ये उसने एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब कौन है? मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब. ये सर ये अगला है, इसको कंफ्यूज ना करें इसके साथ. ये अगली बात है. इस ट्रांसफर एप्लीकेशन पे यही ऑर्डर है. नहीं, ट्रांसफर एप्लीकेशन को नंबर तो लगा हुआ है 127T. बिल्कुल लगा है ना जी, उसी का ऑर्डर है ना. लेकिन वो कॉपी कहीं नहीं है. वो कॉपी है ही नहीं. और अगली बात मैं बताता हूँ ना जी. एक तो ये आपने नोट कर लिया कि द स्टेट हैज मेड जुल्फिकार अली भुट्टो एंड अदर एज रिस्पोंडेंट. दे वर रिस्पोंडेंट बट नो नोटिस. And the more interesting point is that this application could not be filed before 12th when the chalan was submitted. Before that it could not be filed. Malik sir, this order was Sorry, pending this before, point. Sorry. before any higher forum. Madam, I have not been able to get hold of any petition before the Supreme Court, but it is for likes of whether there was a challenge or not. I think it was not. But then there was a petition filed by late Zulfiqar Ali Bhutto before the High Court wherein this issue was raised, and that order is very interesting which has been passed. But these are, whatever I am saying is undisputed that this is the order, no ground, no contention, and no conclusion, and no notice, in spite of the fact that they were respondent. And the state was conscious, prosecution was conscious that they people are relevant. So This they was the were. responsibility of the court. Yes, of course it is a responsibility of the court. And when just I was submitting, sir, that before 12th this application could not be filed because
under section 526 only a case pending before the court can be transferred. ये पॉसिबल है 13 कोई फाइल हुई हो जब और ये बिल्कुल मुझे नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तो जरा सेफ साइड पे रहा हूँ. नहीं तो ये कहाँ पे पेंडिंग था जो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया? ये मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग था ना जी, मैजिस्ट्रेट से चला गया सेशन जज के पास. अच्छा, वहाँ- उसी दिन 12 को चालान सबमिट हुआ. 12 को मैजिस्ट्रेट ने 190 सबसेक्शन 2 उसके तहत उसने सेशन जज को भेजा और सेशन जज ने उस पर एक ऑर्डर किया, अपने पीपी से कहा कि रिपोर्ट दो. अभी वो रिपोर्ट आई या नहीं आई, वो रिपोर्ट वैसे पड़ी है फाइल पे, मगर वो पिटीशन होगी हाई कोर्ट को. माय लॉर्ड हैज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि दिस माइट हैव बीन फाइल्ड ऑन 13th, बट एट द मोस्ट if we give allowance to the prosecution, it could not be filed before 12th of September, because before 12th of September nothing was pending in any court. And when I will read 526, that too is very relevant, you can transfer a case from a court. You cannot transfer investigation to the court. So no notice. आप कहते हैं कि सेशन जज ने कॉग्निजेंस अभी तक नहीं लिया, केस उनके पास नहीं था. नहीं, उनके पास तो था, चला गया ना जी. कॉग्निजेंस की कंडीशन नहीं है, वो मकसद ये फ्रॉम ए कोर्ट ऑब्वियसली. और आगे वो भी मलिक साहब ये जो है कि इट शैल बी हर्ड बाय द फुल बेंच. अब ये तो जनाब आप देखेंगे कि क्या ये suo ट्रांसफर है. No, sir, please. This is not suo motu. There was a petition. Trial will be conducted. But when there is no petition on the record, But sir, then we can only assume it's suo motu. no, because number is there. So if by all fairness, since I am here to assist this court, I will But not say. who is the petitioner? Petitioner is a state, sir, See, prosecution. why would you assume it's the petitioner? Why not the complainant? नहीं, वो Why नाम not नहीं है the ना जी. accused? Why not anybody else? नहीं, सर ऊपर पढ़े ना, the state versus so and so. या पढ़ा नहीं इसका टाइटल? But it may be because every criminal case is the state versus. Yes. So I don't know. They don't even mention who the petitioner No, is. sir, no. The state is a petitioner because in every criminal case it is the state, because state is responsible for your life, liberty, property, etc., etc. State is the custodian. So as in England, the prosecutor is the crown. Yeah, I'm just taking a charitable view of the matter. If it was suo motu, maybe the court could have done, I don't know. But if it was a state, then notice was absolutely essential to Sir, वो तो the accused मैं and the complainant. सर मैं Maybe the complainant didn't want to उस पे transfer. आऊंगा कि उसका जवाब जो दिया है ना हाई कोर्ट ने, अब मैं इतने पेन में आ गया उसको पढ़ के कि जब उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, they admit it. यस, वो मैं Any application is available on record? तो सर नो application. पता नहीं अब बाकी लोगों की क्या राय है. नहीं, अगर आप ये बात अभी भी कर दें, ये जो आपने कहा जो हाई कोर्ट में जो सर मैं करूंगा, मगर मुझे जरा चलने दें. मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ी सालों के बाद. we appreciate that. मैं चाहता हूं कि मैं आगे उस वक्त चलूं जब आप तमाम लोग जो हैं वो क्लैरिटी में आ जाएं कि जो मैं कह रहा हूं मैं कह सका हूं और मैं समझा भी सका हूं. अब मैं क्योंकि डिफरेंट है ना जी, मैं जल्दी नहीं समझता, जनाब बहुत क्विक हैं, आप जल्दी समझते हैं, मेरा प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ वाले भी होंगे. अच्छा, थोड़ा सा आपको ये अंदाजा होगा मलिक साहब, थोड़ा सा अंदाजा होगा जब आप यहाँ थे और वहाँ वकील की क्या हालत होती होगी. अच्छा, आपका अंदाजा? नहीं, कोई वैसी बात नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल सर, वेरी कंफर्टेबल. कोई ऐसा मसला नहीं है. मैं तो आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन. चार्ज का नहीं No, लिखा I हुआ think, कहीं. सर ये चार्ज तो अगली स्टेज आनी है ना, अभी तो चार्ज कहाँ से आ गया, अभी तो केस आया है. वो जो आपने ट्रांसफर के बाद जो डेट पड़ी है हाई कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्ट एविडेंस के लिए रखा है. सर वो मैं आऊंगा ना जी, उस पे मैं आऊंगा. चलें. Let us not. नहीं करें सर, कोई बात. अच्छा, अब ये मैं सबमिशन ये करूंगा कि इससे पहले कि मैं इस पे अपनी सबमिशंस करूं इस पॉइंट पे कि क्या हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे होती है, क्या नहीं हो सकता. वो भुट्टो साहब की जो एप्लीकेशन कौन से पेज पे है, ये फर्स्ट कोई रेफर कर लेना बेटा. वॉल्यूम 10 है सर, वॉल्यूम 10. ये मौलवी मुश्ताक साहब क्या सेशन जज से एलिवेट हुए थे या लॉयर से नहीं एलिवेट? सर, लोहेट से.
lawyer थे and he was elevated in 1960. He was acting. Who was the Chief Justice? सर वो मार्शल लॉ के बाद एक्टिंग का उन्होंने ओथ लिया पहले, फिर उन्होंने परमानेंट का भी लिया, वो भी मैं अगर इजाजत कौन सी वॉल्यूम? ये अभी मैं रेफर कर रहा हूँ वॉल्यूम 10 को, वॉल्यूम 10 सर। वॉल्यूम किशमिश पेज कौन सा? ये पिटीशन है नहीं, पेज कौन सा है? अच्छा पेज 19 पिटीशन का, अच्छा पेज 19 सर, वॉल्यूम 10 सर, 19 सर। अब क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं, आपने कहा कि यही बता दें उन्होंने क्या इसका ऑर्डर लिखा है, मैं इसलिए इसको सर पेज 19 वॉल्यूम 10 मिल गया सर? मिल गया, मिल रहा है जी। बाकी सब सर्विस पूरी तरह नहीं है सब जगह। ऑन बिहाफ ऑफ जी सर, ये एप्लीकेशन है क्रिमिनल ओरिजिनल के ऊपर है, नंबर मिसलेनियस नंबर, ये क्रिमिनल मिसलेनियस है 933 M of 1977. Sir, this was filed on 5/10/77. So important is this was before framing of the charge. This was before framing of the charge. So this is in re the state versus the complainant, Mr. Zulfiqar Ali Bhutto accused. It is on behalf of Mr. Zulfiqar Ali Bhutto accused in the above mentioned case. It is respectfully submitted. ये पहला पैरा मैं छोड़ देता हूँ. This is political. मैं जनाब को अगले पेज पे ले जाता हूँ. ये पेज 2 पे सर, जिसपे वो बायस की बात उन्होंने की है, पढ़ूं सर? पेज 2 ग्राउंड 3, पेज 2 इस पिटीशन का, जी पढ़िए। Page 2, ground 3, the apprehension of the petitioner about the partiality and prejudice of Mr. Justice Mushtaq Hussain is further enhanced by his order transferring the above captioned case from the lower court to the high court on the day the petitioner was enlarged on bail. Mr. Justice K.M. Samdani, before a complete chalan was even submitted to the subordinate court concerned. ये उन्होंने ये ग्राउंड ली है. अब ये एक्टिंग चीफ अगला है 4, that against the order passed Mr. Justice Mushtaq Hussain as acting chief justice constituting a special bench of 5 judges presided over by him for the trial of the chalan case when the private complaint, अब वो जिक्र आ गया जनाब का, my lord Justice Tariq Masood was asking. 5 judges presided over by him for the trial of the chalan case when the private complaint with regard to the same matter was being inquired into by a division bench of the High Court caused grave apprehension about getting a fair trial. It is submitted that on that date even complete chalan has not been filed, but yet 24 September was fixed for hearing of the case. That the withdrawal of the chalan case from the lower court without hearing the petitioner, now he is agitating, without hearing the petitioner has caused prejudice to him and deprived him of his right of appeal revision to the High Court. तो से ये इतराज जो पूछ रहे थे जनाब पिछली डेटों पे, ये इतराज हुआ और इसका ऑर्डर भी हुआ. अब वो ऑर्डर देख लेते हैं. मिला है? नहीं मिल रहा. कहाँ से हैं? पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 है. अच्छा सर, ये आपका अब पार्ट 9 है वॉल्यूम की बजाय. किसी जगह पे ये पार्ट है, किसी जगह पे वॉल्यूम है जी. ये मिल गया है सबको जी? मिल गया जी सर. पेज इसका 35 है, यहाँ से ये ऑर्डर शुरू हो रहा है जी. ये इसका ऑर्डर तो बड़ा लंबा है, मैं इसको स्किप करूंगा. 55 पे कौन सा है? 40. अच्छा जनाब, इससे पहले जरा मैं पैरा पढ़ दूं. पैरा 14 जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम सब ने पीसीयू का ओथ उठाया है, सुप्रीम कोर्ट से पीसीयू का ओथ उठाया है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसी ऑर्डर का, हाँ इसी ऑर्डर में लिखा है एट पेज 43 सर. पेज 43 पैरा 14 वॉल्यूम. बिफोर यू कम टू इट, ये अगर आप टाइटल देखिए पेज 35 पे,
इसमें दो एप्लीकेशंस का ये दो हैं, दूसरी भी है। दूसरी कौन सी है? 933 तो जी, वो वाली है, 933 में उन्होंने वो तो रिक्यूजल वाली है। हाँ वो कोई और दूसरी वाली कौन सी है? ये एक तो ये है ना जिसमें उन्होंने इनका प्रेजुडिस और हाँ, वो तो ठीक है। दूसरी कौन सी? दूसरी में क्या इशू था? हाँ वो था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट को वो नहीं कंट्रोल कर सकता, दिस शुड बी परमानेंट चीफ जस्टिस, मगर वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ये इस रेफरेंस से ये ट्रांसफर के मैं इसलिए उसको स्किप कर रहा हूँ, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़िए, पेज बताएं। जी पेज 43 सर, पार्ट मिलॉट पार्ट 9 वो एक से इधर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बड़ा स्कैटर्ड हुआ है सर, कोई उधर ऑर्डर है, कोई जब उधर तक पढ़ते हैं वो बाकी जनाब जी आगे नहीं, वो आप पढ़ेंगे तो हम सुन लेंगे, ना भी आए ये सबके पास है। बिस्मिल्लाह। जी प्लीज स्टार्ट। जैसे सबके पास नहीं पढ़ते तो अब सुते रहते हैं ना जब तक आ जाएगी। I have no objection sir, ये आप सही पढ़ेंगे यकीनन। I will obey every command of नहीं your जी lordship. प्लीज Sir, the next challenge is to the oath subscribed to by the acting Chief Justice at the time of assumption of his office. The only objection is that the acting Chief Justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PCO. But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं, मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं, कोर्ट ही कोई ना। बड़ी बात है वैसे। बहरहाल एनीवेज, अब दूसरा दिखाओ, दूसरा पेज 55। नहीं मगर मेरिट्स पे बताएं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया, आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है। इट्स अ गुड हिस्ट्री लेसन, बहुत अच्छा। इफ नथिंग एल्स। अब जनाब मलिक साहब ये बताएं कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की? कौन किस केस में? इसी में ट्रांसफर में सर 526 अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी, क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन, वो मैं उसको पढ़ूंगा। साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने से, स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी। स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं ना, हम अपील फाइल करते हैं, somebody is convicted, so that is ABC versus state. तो नहीं वो लिखे ना लिखे, इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा, बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है, वो कोई इतना सीरियस बात नहीं। अब मैं 35 दो, अब आप मेरिट वाली बात बताएं, वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं? चल ना मेरिट पे। अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा, नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सर पेज 55 सर, पार्ट 9 के 31 जी पार्ट है जी 9 जी 55 पेज पे जी 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी। एक कंप्लेंट यही टिश्यू देना, एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against Mr. Z. Bhutto and 19 other accused persons under section 120B 119। नहीं skip this, हाँ जी सर ये बड़ा जरूरी है सर, अच्छा ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने तो पढ़ लिया जी, कुछ खास बात है तो बताएं।
सर अगर इजाजत दिए तो मैं पढ़ लूँ तो फिर बता दूँ तो ज्यादा बताइए। सुन ले सर, कुछ नहीं होता सर, बड़ा जरूरी है। I'm in a very difficult position of trying to get things completed also. ये बस नहीं हो जाएगा सर। देखिए वो उससे बेहतर है कि वो, अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूँगा कि अगर जल्दी में कुछ चीज़ रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है। जैसे तो आप इसको सुन लें, मैं तैयार हूँ, आप रात 12 बजे तक मुझे रखें, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन में, स्किप कर देता हूँ। वाज फाइल्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट एट लाहौर बाय मिस्टर इफ्तिखार अहमद तारी द कंप्लेनेंट अगेंस्ट एप्लीकेंट सो एंड सो। अब मैं इसमें वो आ जाता हूँ जो कंप्लेंट इन्होंने की है। मियां अहमद तारी ये कौन आ गया? ये कुछ दूसरे थे जी, ये बेटा ये है द कंप्लेंट ऑफ अहमद रजा कसूरी, पैरा 32। करना क्या चाहते हैं? जी, बड़ा करना। Was referred to a division bench consisting of Mr. K. M. Samdani J. and Mazrul Haq J. अब यहां मैं पॉज करूंगा और मैं सबमिट करूंगा कि वाई नोट this was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is, अब इसको आप क्या कहेंगे? बायस कहेंगे, टैक्ट कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब आप इसको नहीं, आप नहीं कुछ कहते हैं आप? सो मैं कहता हूं दिस इज ए क्लेवर मूव। जी सर, ठीक है। ये क्लेवर चीज है ना जी, ये बायस से आगे बात है। बायस तो एक चीज है ना, आपका एक व्यक्ति है कुछ स्किप कर गए, ये तो आप किस तरह कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस है? वायलेशन भी नहीं है। वायलेशन तो बड़ी चीजें होती हैं कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे नहीं मिली, मुझे ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये वायलेशन नहीं है कि एक goes to the root of a fair trial. हाँ बिल्कुल, ये आपने एक क्लेवर लिया, because I can now read the mind of the judge as well. कि वो अगर नोटिस किया गया, सो ऑब्वियसली द अक्यूज साइड विल आर्ग्यू कि सर द प्राइवेट कंप्लेंट इज पेंडिंग बिफोर ए 2-member bench. Refer this 2-member bench, and in that 2-member bench one has already allowed bail to Mr. Zulfiqar Ali Bhutto. वो कंप्लेंट क्यों 2 member bench?
बेंच के पास अब पता नहीं जी वो उस वक्त चली गई होगी, पता नहीं चला होगा, यहाँ कोई बात अभी तक सही नहीं हुई होगी, मैं उस पर कुछ तबसरा नहीं करता। मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो फैक्ट है। उसमें एक जज ने बेल दे दी ना। नहीं, ये कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जाती, वहीं थी ना जी पेंडिंग। नहीं, ये तो हाई कोर्ट के सर वो ट्रांसफर होगी ना। नो, अभी ट्रांसफर नहीं हुई जी। नहीं सर हो गई है। आप ऐसा करिए कि 56 पेज के ऊपर से चौथी लाइन पढ़िए, अभी क्लियर हो जाएगा कि वो कंप्लेंट जो अहमद कसूरी इन्होंने दायर की थी वो कहाँ गई। ये पढ़े। सिमिलरली एक कंप्लेंट, हाँ वही है। हाँ ये पढ़े यहाँ से। हाँ मैं सर वो जल्दी में आता हूँ ना तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए। कंप्लेंट के अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने, मैंने सारा पढ़ना था, वो फिर मुझे डायरेक्शन आ जाती है। हाँ पढ़े। सिमिलरली ये सर चौथी लाइन पैरा 56 से, सिमिलरली ए कंप्लेंट केस फाइल्ड बाय अहमद रजा कसूरी इन रिगार्ड टू द मर्डर ऑफ हिज फादर नवाब मोहम्मद अहमद खान वाज ट्रांसफर्ड this court by order dated 15th of August 1977। पहले ही हो गई थी ये पहले, ये तो मैं कह रहा हूँ कंप्लेंट पहले ट्रांसफर हो चुकी है ना। इसीलिए जो मैंने जो आर्गुमेंट जनाब को दिया कि मूव क्या थी, करना क्या था, क्योंकि उस टू मेंबर बेंच में से वन ऑनरेबल जज जस्टिस समदानी अलाउड बेल टू जुल्फिकार अली भुट्टो इन द स्टेट केस कंप्लेंट। आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहला उनका मूव ये था कि हम ये कंप्लेंट आए मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट आ जाए, आ गई। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनको बेल मिल गई। जब बेल मिल गई दे सेड ओके लेट्स ट्राई अनदर थिंग। उनने फिर एक और मूव किया और उनने जो मेन केस था उसको ट्रांसफर किया नोटिस के बगैर। ठीक, समझ आ गई ना जी बात, वेरी क्लियर। और ये भी बता दें क्या क्या मैजिस्ट्रेट से वहाँ हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकता था, ये भी आपने। अब ये बिल्कुल हो सकता है सर। अब उसमें लेकिन एक बात और क्लियर भी हो गई ना जी सर, कि एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट के नोटिस में था कि एक कंप्लेंट यहाँ पड़ी है और नूरलाई केस के तहत उसको साथ चलना चाहिए। नहीं मगर सर वो तो देखे ना, अब मैजिस्ट्रेट तो ये ऑर्डर नहीं कर सकता ना कि इसको ट्रांसफर कर दें हाई कोर्ट के पास। नहीं हाई कोर्ट के पास है ना जी, मगर वो दूसरा चालान जब आया मैजिस्ट्रेट के पास, उसके पास तो ही हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो तो अंडर द लॉ ही कैन नॉट लुक एट दिस कंप्लेंट। अब माय लॉर्ड जस्टिस Yahya has very aptly summarized the situation. Yes. And I think he's fully understood what was the move, though it was clever move. What was the intention? No, since your lordship is looking for malice, Yes. for touching the merits of the case, so step by step your lordship will feel that malice is not clear, but it is floating on the surface of the record in every respect. ट्रांसफर हुई थी विदाउट नोटिस, कंप्लेंट भी विदाउट नोटिस। कंप्लेंट तो सर कंप्लेंट में तो, क्योंकि कंप्लेंट में उस वक्त तक एक्यूज हैज नॉट बीन समन्ड, उसमें तो वो अभी 202 की इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो वो तो था ही कोई नहीं। वो हो गई अगस्त में ट्रांसफर हो गई, उसमें मेन कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रांसफर हो गई जी। कॉग्निजेंस तो नहीं ली ना जी, उन्होंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, मगर वो अब उसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे 526 को अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें तो और बहुत बातें करनी है, इस पॉइंट पे बहुत आर्गुमेंट्स है। ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट स्टेप में तो मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज को भिजवाना था, वहां से फिर हाई कोर्ट जाना था स्टेप। हाँ जी, तो अभी उसी के पास थी ना वो कंप्लेंट, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल ये रिकॉर्ड यही कह रहा है बाद फिर आगे कहानी होगी। वो कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है कसूरी साहब वाली। वो मैंने लेटर भी लिखा था आपके ऑफिस को, उन्होंने मुझे कुछ 10 कॉपियां भेज दी, सारी एक एक सफ़ा देखा। वो कोई तारी साहब की कंप्लेंट है, कोई किसी और की कंप्लेंट है, जो कसूरी साहब ने फाइल की थी वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और उस कंप्लेंट पे हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हुए वो भी रिकॉर्ड में। अब तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो आपको उससे भी असिस्ट कर रहा हूँ कि जनाब ये स्टेट ऑफ अफेयर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक स्टेप जरूरी है, एक एक स्टेप जरूरी है। अगर जनाब चाहते हैं कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि इस चीजों को देखा जाए। सर अब मैं पढ़ूं सर। By the order of so and so, another complaint Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfiqar Ali Bhutto, ये भी कोई और है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। The complaint of Ahmed Raza Kachuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir. Para 33.
The police filed an incomplete चालान before a magistrate on 11th of September. ये 12th को है, उन्होंने 11th लिख दिया. The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, हालांकि एक्ट उसने 190 में किया, ये जज साहब ने 193 लिख दिया. The same day to the Court of Session, the state filed an application for transfer of this case to the original site of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. अब वो कौन सी ground है? We don't know. Nothing is on the record. उन्होंने कहा कि वो भी हुए थे तो ये भी कर दी. अब जनाब इसका 34 का मैं पढ़ूंगा, क्या पूरा तो मैं नहीं पढ़ा, मैं ऊपर से 7-8 लाइनें छोड़ के नीचे जहां पे 10:30 AM लिखा है ना जी, एक लाइन में 10:30 AM, मैं इससे आगे पढ़ूंगा. There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused. In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. अब ये मुल्ज़म को भी ये एडवाइस दी जा रही है कि 5 जजों पे इत्मीनान ज़्यादा करो. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, ये कहाँ है वो जो ट्रांसफर हो गया, वो पढ़ देना. हाँ ये सर, अब मैं सर बाकी अभी स्किप कर रहा हूँ. पेज 63 जिसमें ये ट्रांसफर के बारे में बात आ रही है. पेज 63 सर, पैरा 42. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा पेनफुल है, बड़ा पेनफुल है पर्सनली फॉर मी सर. An other ground is that the order of transfer has been passed without notice to the accused petitioner. No such notice was required in the present case. अब आप ये बता दें, मैं नहीं, I can't comprehend sir, कि 5 judges of the High Court headed by the Chief Justice, who by that time was judge for the last 15 years, they are writing no notice was required. और इससे पेनफुल बात अगली है. Under section 526(6) provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. अब जनाब यहाँ पे मैं जरा 526 का 6 पढ़ दूंगा ताकि जनाब को पता चले फिर कि क्या हुआ है. जनाब आप वो जो कर रहे हैं ना कि मूव, क्या मूव है, अब यहाँ से क्लियर होती है. ये जनाब 526 subsection 6 sir. पढ़ूं सर जी. Notice to public prosecutor of application under this section. Every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. इस नोटिस को उन्होंने बना दिया. अब जरा देखें, अब इसको जनाब क्या कहेंगे? Ignorance. If it is ignorance. Ignorance of all the 5 judges. No. नहीं, क्या कह रहे हैं कि नोटिस सिर्फ प्रोसिक्यूटर को होगा. प्रोसिक्यूटर को नोटिस है एक्यूज की तरफ से. जिस तरह जनाब की कोर्ट में है कि जब आप चैलेंज करते हैं तो वो एक कॉपी भेजते हैं ना. अब इससे बड़ी, I don't want to use this word, but बदयांती क्या होगी? What is mentioned if the state applies for the transfer?
If the state applies for यस वो कहते हैं जरूरत नहीं है। क्यों? नोटिस तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक्यूज से रिलेटेड है कि अगर वो करेगा तो वो नोटिस देगा। वो कहते हैं क्योंकि स्टेट को नोटिस होना जरूरी है, एक्यूज को नोटिस की। मलिक साहब ये तो आप इस पे आ गए ना, मगर ग्राउंड्स ऑफ ट्रांसफर जो हैं वो कहाँ है? वो 526 में दिए गए 1 2 3 4 5। सर मैं आऊंगा तो उनका तो तस्करा है ही मैं नहीं। आऊंगा। मैं तो आपको देखिए, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि ये जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है बट जरूरी बड़ी है। ये स्टेप बाय स्टेप। Whether for this presidential reference or Yes, sir. not, but good history lesson. यस सर बिल्कुल And है, for students of law बिल्कुल है। मैं कहता as हूँ well as for judges. मैं कहता हूँ कि इसको कंपल्सरी कर दिया। आई टॉट दिस केस एट लम्स फॉर 4 months। फॉर 4 months मैं तो कहता हूँ इसको कंपल्सरी कर दें कि ये जो भी क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करना चाहता है या जिसको भी आप एलिवेट करें वो ये केस पढ़ के आए। अब इसकी वैसे मैं ये सवाल पूछता था अक्सर, वो जब मैं ASCs को एनरोल कर रहा था, तो खास तौर से जो क्रिमिनल केसेस करते हैं कि आपने जजमेंट पढ़ा है ये वाला, और शायद ही किसी ने पढ़ा होता था। नहीं वो किसी सर केस को एक और मैं रिक्वेस्ट करूं यहाँ पे, केस अगर आपने क्रिमिनल केस को समझना है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज से आप जजमेंट से कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन। आप रिकॉर्ड देखें, आप एविडेंस देखें, वहां से समझ आती है। अब ये अगर इंटरप्रिटेशन है कि वो कहते हैं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन मान ली जाए, अब मैं आ गया जी, आगे बढ़ें सर आगे। पॉइंट। हाँ सब सेक्शन 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. अब इसका क्या करें? मगर ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ट्रांसफर तो केस ऑलरेडी हो चुका है। वो कहने की जरूरत इसलिए थी कि आपके पास एप्लीकेशन आ गई। वो तो एप्लीकेशन 22 पे आ रही है। नहीं इस पे आ रही है ना जी, 2 दरखास्तें मैंने पढ़ी पहले आपको, उसमें ये स्पेसिफिक ग्राउंड है की जानिब से। नहीं सर नहीं, मैं थोड़ा सा केस ट्रांसफर हो गया, उसने एतराज किया without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court, an application was filed in the High Court. नहीं मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ, वो जो ऑर्डर आपने जो सबसे पहले पढ़ा था, जरा उस ऑर्डर पे वापस आइए एक सेकंड के लिए। एक नंबर पेज पे जी, वो 1 नंबर पेज जी आप फरमाइए, जी फरमाइए सर, मैं मेरे जुबानी याद है, आप पूछिए। इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट, यस जरा सा मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, इज ट्रांसफर्ड टू दिस कोर्ट फॉर ट्रायल। नाउ द सेम बेंच इज हियरिंग दैट इट हैज बीन रॉन्गली ट्रांसफर्ड। एक ये पॉइंट है, वो जो एप्लीकेशन में जो थ्रस्ट ऑफ द मैटर है ऑन दी प्रेजुडिस और बायस ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये तो ऑर्डर हो चुका है सर। इसी तो फिर ये वो इतना लंबा ऑर्डर, अब वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अब वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अनलेस आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल 100% ठीक है आप। हुआ ये कि टेंटेटिव ऑर्डर नहीं है, ये देखें सब्जेक्ट टू नोटिस लिखा है, इज ट्रांसफर टू द स्क्वायर फॉर ट्रायल, full stop, खत्म हो गई। नहीं, but that was a short order. It says for short order we giving reasons now. Page 35 पे देखिए ना। सर नहीं वो दूसरा, देखिए मंजूर मलिक साहब, go back to page 2. Page 35 says so. नहीं सर नहीं, I'm talking about the order on page 2 in view of the submissions made by Volume. ये तो conclusive order आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सर मैं आज करता हूँ। Then he turns it around, says for the short order passed earlier. It's not a short. No, he's saying that, man. From where you are reading, sir? Sir, page 35. वॉल्यूम पार्ट 9 जरा देखिए ना, उन्हीं एप्लीकेशंस पे फिर ऑर्डर आ रहा है ना। नहीं, ये वो एप्लीकेशन नहीं है सर, वो एप्लीकेशन है
127T of which have already been dismissed by a short order. वो तो और है ना, यही सीएम है ना, पहले डिसमिस यही सीएम है, नीचे इनका शॉर्ट ऑर्डर के नीचे ऑर्डर। साहब मैं शायद अपनी वजाहत नहीं कर सका, मैं अगर आपको पेज नंबर 2 पे हम जाएं वापस, जो है in view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. Full stop. Concluded matter. Now, in the subsequent order, they're justifying this order. वो इसलिए justify कर रहे हैं, मैं Which was strange. सर वो इसलिए कर रहे हैं कि जो accused की तरफ से ये जो मिसलिनियस एप्लीकेशन लिखी है ये भुट्टो साहब ने दी है, ये डिफरेंट है, भी कवर कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? उसको डिसमिस किया उन दोनों एप्लीकेशन को शॉर्ट नहीं, मेरा मतलब ये है कि टेक्निकली स्पीकिंग इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन अपील इट शुड हैव बीन बिफोर सम अदर बेंच। फिर ठीक है, क्योंकि ये खुद ही फिर उसको रीजनिंग दे रहे हैं। सर वो इसलिए कर रहे हैं ना कि भुट्टो साहब prayer was that this court shall not hear this matter. He was alleging bias, and for alleging bias, this was one of the ground of bias. But against one judge. One judge was obviously, sir. अगर उन्होंने उसको जस्टिफाई करने में बहुत सी चीजें कर दी। सर वो हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो तो फिर जब एक आप चीफ जस्टिस को करेंगे तो बाकी तो शामिल हो ही जाएंगे ना, वो तो सारे शामिल हो जाएंगे उसमें। वो मैं जो बात कर रहा हूँ, आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं इधर? ये तो मुहावरा है जी, जो समझना चाहे मुझे मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसने मुहावरा हमारी अदालत बड़ी डेमोक्रेटिक है, हर जज अपने डिसेंट भी करते हैं, आप नोट कर रहे होंगे। ये तो बड़ा हेल्दी साइन है ना जी, डिसेंट करना का मतलब है कि यू आर अलाइव, आप एक जो जिंदा है वो ही डिसेंड करेगा ना, जो डिसेंट करते वो हाथी के पाँव से निकल जाता है, जो डिसेंट करते वो हाथी के पाँव से निकल जाता है। अब आप मैं नहीं ज्यादा लिबर्टी नहीं लेना चाहता। अच्छा सर, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक एट दिस पॉइंट? कर ले जी, कर ले। नहीं, क्योंकि आप काफी देर से खड़े हुए हैं। सर मेरे नहीं हमें है फिक्र। कोई कर लेते सर, आप बता। मेरा ख्याल है इस पॉइंट को खत्म कर लें, ये जो ट्रांसफर वाला, चले ये इसको खत्म, चले बिल्कुल ठीक है, खत्म कर, बिल्कुल ठीक। आई एम विद यू सर, आई एम विद यू। ये खत्म कर लें। नो सर, नाउ आई विल लाइक टू रीड सेक्शन 526. This is the point. I hope I am clear on the change of investigation, re-investigation, transfer of the case, no notice to the accused, no notice to anybody, then justification that notice is not required. So I am clear. Now sir, as your lordship has rightly observed that this provision has not authorized the High Court to transfer any case without any justification. There must be some reason. There are grounds which have been mentioned in this section. Okay, under such and such ground, a case can be transferred to the High Court. And those grounds are question of law of unusual difficulty, general convenience of the party, such order is expedient in the end of justice. आपने पहला वाला छोड़ दिया, वो भी सब कर ले, उसको भी शामिल कर ले। मैं जिस पॉइंट पे जल्दी fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court. ये बिल्कुल ठीक है सर, वो आप काफी चीजें उसमें, अगर ये लिखना तो चाहिए जजेस को। सर मैं तो कहता हूँ लिखना चाहिए नहीं, ये तो this is the mockery of law if you pass an order just by saying in view of the submission made in the application it is transferred, and that too by a 5-member bench headed by the Chief Justice, and in a case where death sentence is provided. So, but anyway, this is the reality you people are facing now. This is the reason why people say this is a judicial murder. This is the reason. These are the grounds. अब जनाब इसका मैं पढ़ूंगा subsection 2, ये बड़ा important है सर, बड़ा important है. When the High Court withdraws for trial before itself any case from any court, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case has not been withdrawn. It's a very important, sir. अब
your lordship have noted that High Court has power to transfer a case from magistrate to the court of session, from the court of session to another court of session, but this provision is not for that court. This is for the High Court. If High Court withdraws a case from any court to it, it will follow the same procedure which is prescribed by that court. कोर्ट ऑफ सेशन का प्रोसीजर सेशन या मजिस्ट्रेट का, अगर आपने मजिस्ट्रेट से किया है तो you will follow the procedure of the magistrate. This is very important. Now I will draw your attention, your lordship, to section 374. Kindly see what is 374. यही जो है कि कंफर्म कौन करेगा डेथ नहीं पेनल्टी. सर, मैं अभी आता हूँ, बड़ा ही it is a novel point. हाई कोर्ट 5 मेंबर बेंच उसको डेथ पेनल्टी दे रही है, तो कंफर्मेशन क्या सुप्रीम कोर्ट सर, वो- 274 376. सर मैं जरा इजाजत दें मुझे. सेक्शन 374 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका कैप्शन है सर, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन passes sentence of death, the proceeding shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. आगे सर वो procedure सारा दिया, वो क्या करेगी High Court. अब now this provision is part of procedure of court of session. Your lordship has gone through many judgments. Every judgment of the session judge or additional session judge, at the end it is mentioned that reference is being sent to the High Court under the provision of so and so. This is part of procedure. So the question arises, if this case, a case where sentence is death is provided, is transferred to the High Court, where this provision will go. Then the number of questions, related questions arise. बिल्कुल arise होते हैं. One, firstly, Yes, sir. are you saying that under 526, no murder trial can take place? That could be number one. No murder trial can be transferred to the High Court. Ek second, let me just finish. One interpretation could be, because if you read the two sections together, since confirmation is required and there is a possibility of a capital punishment being given, therefore High Court should never transfer to itself a murder case. That could be one interpretation. The second interpretation could be, no, you can still transfer it, but then the High Court is not actually acting as a High Court, but it is actually acting as a Sessions Court, and then the matter will have to go to another bench of the High Court, exercising powers under the High Court. Very right. Very right. I mean, I don't know. Or since the third one could be, since this has been done under the 526, this is a redundant provision. These, I think, are only three scenarios. Very precisely. अब आपका, what is your answer? मेरे दोनों ही हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसको करेक्ट करने के लिए, it is not a transfer of the trial, it is withdrawal of the trial. सेम ही ठीक है जी. No, transfer is something नहीं else. सर, नहीं, एक ही वो पढ़े ना जी. इसको आप अटेंड करने पहले देखिए ना, विड्रॉल है, एक मामला एक कोर्ट में पेंडिंग है, आपने अपने पास ले लिया, वो किसी की एप्लीकेशन पे लिया या ऑन योर ओन इनिशिएटिव, वो एक ही चीज है. विड्रॉल और ट्रांसफर मतलब ये है कि हाई कोर्ट में जाग चला गया ना जी. अब ये अग्रीड के आपके प्रोसीजर ख्याल में अब ये चौथा सिनारियो वो लार्जर बेंच का है. आप हमें ये जरा मैं करता हूँ, मैं जरा यू आर गेटिंग डिट्रैक्टेड. नहीं जी सर, आप प्रोसीजर ऑफ यस, प्रोसीजर तो वही रहेगा ना. सेशन ट्रायल. मैं यही कह रहा हूँ ना कि सेक्शन 374 इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, एंड देन देयर इज अ वेरी गुड जजमेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन, ऑथर बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह. Thank you, sir. I'm just reading that. You're only concerned today with Shah Sahab. This is PLD 2021. नहीं, पहले ये आप हमें बताएं ना. क्या सर, ये सुनने में बताता हूँ वो बात. आपकी बात मैंने नोट कर ली है, मैं उसका जवाब देता हूँ, मगर ये थोड़ा सा जो PLD सर 2021 सुप्रीम कोर्ट 600 यही है. अब इसका पैरा 6 है जी, फिर 7, 8 दे आर रेलेवेंट. आपका जजमेंट है? नहीं, मेरा नहीं, शाह साहब का है.
आप सिग्नेटरी शाह साहब इज द ऑथराइज्ड सर। आप सिग्नेटरी थे इसमें। हाँ आप ये भी बात secretary ये सही है, बट आई डिड नॉट ऑथराइज। Which paragraph? सर पैरा 6 से अगर कहते मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। नहीं सिर्फ बता दें क्या ये point पैरा है। 6 है, ये इन्होंने कहा कि ये एक ड्यूटी है, ये और ये ड्यूटी उससे बड़ी है। अपील जो है वो राइट है। This is the duty. And from my personal experience as a judge of the High Court, sir, I decided 2 murder references where there was no appeal. No, kindly look at the wisdom. There was no appeal. 2 cases. I decided as the judge of the High Court with perhaps my Lord Justice Tarak was with me or somebody else, I don't remember. But in both these cases, both the accused were acquitted. Both accused. So this is the duty, that is a right. And it is clearly mentioned that if this reference has been sent, that sentence cannot be executed unless reference is. There is no bar if no appeal has been filed. अपील के लिए नहीं है, ये रेफरेंस के लिए। Now coming to that point, कि first interpretation, my interpretation, that if we read these 2 provisions together, so I will submit that this, a case where death sentence is provided, cannot be transferred to the High Court because of 374, because otherwise it will become redundant. अगर उसको provision तो apply भी नहीं हो गया ना। वो कौन सी सर? हाँ वो भी है, एक वो भी पॉसिबल। सर आप 5 मेंबर बेंच सुन रहा है तो उसका 10 मेंबर बेंच रेफरेंस 9 मेंबर के पास दाखिल हो जाता है ना। ये एक related question in Pakistan's judicial history. Has a murder trial ever been conducted by the High Court? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें Murder trial. मैं यही अर्ज करने लगा। जो हमने रिसर्च किया, मैंने नहीं की, क्रेडिट गोज टू these 2 young barristers. इंडियन जुरिस्डिक्शन में एक भी केस नहीं है, ठीक है, हाँ छोड़ो, इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं है, एक भी केस नहीं है सिंस 47 till 1970, हमने 77 तक देखा ताकि वो पीरियड रहा। पाकिस्तान में 2 केसेस हैं। दो एक केस है कराची का, दैट वाज अगेंस्ट गोहर अयूब, son of former President Ayub. Some private complaint was filed. I think that was in connection with the election of 64. Karachi incident था कोई, उसके complainant ने फाइल की कि जनाब मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो गौहर अयूब ने भी कर दी, दोनों ने कर दी। That case was transferred. मर्डर केस था, ये मर्डर केस था, कंप्लेंट थी अभी वो। That matter went to the High Court, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कंप्लेंट केस वाला था उसकी पिटीशन खारिज कर दी, और दूसरी उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अभी कॉग्निजेंस उसने इंक्वायरी नहीं की थी उसमें, वो जजमेंट हम दे रहे हैं जनाब, वो खुद देख लीजिएगा। रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टेड है जी, साइटेशन दे दें, बताइए जी, मुझे दे दो। 1968 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, ये कराची है ना, 1675 और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या गई? 675 नहीं, 1675 सर, 1675। वेरी राइट सर, 1675। इसमें क्या था कि यू कैन डू इट? हाँ जी, हाँ जी, इट कैन बी ट्रांसफर। यस, उन्होंने ये बात नहीं कि इस इशू को नहीं डिस्कस किया कि 374। ओके, तो ये आप खाली बता रहे हैं कि ऐसा केस हुआ था? नहीं, ये हुआ और इसमें दोनों पार्टी ने कहा, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करके कहा मैजिस्ट्रेट। इसमें कंफर्मेशन की बात का क्या हुआ? कौन सी कंफर्म? वो फैसला ही नहीं दिया, अभी तो ट्रांसफर हुआ केस, ठीक है, उस ट्रायल की, वो तो फिर वापस हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, PLD 1965, सुप्रीम कोर्ट पेज 496। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेन 1965 कैसे? 68 का तो हाई कोर्ट का केस है। सर वो 65 में फरवरी, अब आप क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट लेट हुआ। ये रिपोर्ट लेट हुआ था, रिपोर्ट लेट। रिपोर्ट PLD कब की?
PLD? PLD है सर 1965, ये रिपोर्ट लेट हो उन्होंने गया, वापस भेज दिया वो वापस भेज दिया। Page Supreme Court. क्वेश्चन इट अराइज सुप्रीम कोर्ट पेज 496। ये रीजंस क्या दी थी मलिक साहब वापस भेजने की? सर वो रीजन इसका मैडम ये है कि उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अभी तक उस पर कुछ किया ही नहीं है, अभी तो इंक्वायरी नहीं की, तो कैसे ट्रांसफर कोई होगा? प्रेसिडेंट नहीं है। कुछ नहीं। और दूसरा केस ट्रायल की और कोई कुछ नहीं, नहीं एक और है जी, वो है केस, वो जो साबिक गवर्नर थे अमीर मोहम्मद खान, उनका केस भी ट्रांसफर हुआ था हाई कोर्ट में, मगर वो भी दोनों की रिक्वेस्ट पे हुआ था, कंप्लेनेंट भी और दूसरा भी। उसका ट्रायल हुआ नहीं हुआ ये कुछ नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने अपने तौर पर भी हाई कोर्ट से पता करने की कोशिश की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें, बट वह बरी हो गया मेरा, मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ट्रायल हाई कोर्ट में हुई थी, हियरिंग दी केस, और वो उसमें बरी हो गया। असद मलिक असद वाज द अक्यूज्ड, मगर उसकी साहब दैट इज नॉट ए रिपोर्टेड जजमेंट, इसलिए हमें नहीं I मिली। don't think it was reported. It was not. But it was this question was not considered. No. self defense was taken as the defense. वो अब वो भी जजमेंट लिख लीजिए, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, कौन सी यार क्या करती हो, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1969 1969 पेज 1058 1058 लाहौर का केस है जी। ये अमीर भट्ट मलिक यही वाला अमीर नहीं, अमीर मोहम्मद मलिक क्या नाम ने बताया? मलिक असद, मलिक असद, ये वाला केस है असद का जी। ये बच्चे चौधरी साहब फरमा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही फरमा रहे हैं। मुझे भी ऐसा बताया गया कि वो बरी हो गया, मगर मेरे पास जजमेंट नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं बताई बात, क्योंकि मैंने कहा कि फिर वो डिफिकल्टी है। बट इन एंड इसमें भी दोनों ने कहा कि ट्रांसफर कर दें, और ये जो पॉइंट मैंने आज रेज किया 374 का, दिस हैज नॉट बीन कंसिडर्ड इन एनी जजमेंट। वो अगर इकट्ठे लोगे तो वैसे ही नहीं वो हो गया ना जी, नहीं पहले भी दोनों ने कहा ना जी, दोनों केसों में in our this jurisdiction should we expound on this or not? कहाँ पे? In this case No, not at all, not a touch even। आप देख रहे हैं, मैं कहते हैं पढ़ देता हूँ। नहीं, हम आप जो jurisdiction इस्तेमाल कर रहे हैं advisory, should we expound on section 526 read with 374 or should we not? I say you must, sir, you are here to do complete justice, not with the people but history as Expounding well। on something ठीक है, which has not been considered by any court before. नहीं, ये रेज कहाँ से कंसिडर होता जब आप नोटिस ही नहीं कर रहे। Is this a good time to break now? मैं तैयार हूँ जी, जब अभी कर ले बात। नहीं, मेरा मतलब कि आपका कोई सीक्वेंस नहीं तोड़ना चाहते हैं। सब ये हो गया जी, ये ट्रांसफर की हद तक मैं आई थिंक आई एम क्लियर। 374 को भी आपने मीट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। कि वो नहीं हो सकता, और आपका ख्याल ये है कि सेशन ट्रायल जो है वो ट्रायल मर्डर केस जो है उसको ट्रायल पे नहीं नहीं, मेरा ये हर केस जिसमें डेथ सेंटेंस है। Yes. And the second, the interpretation I will adopt of my वो वाली है कि अगर वो- very good interpretation, very good interpretation. I must appreciate. Finally. That's fine. Thank you, sir. Thank you. आधा घंटे में ठीक है? Is that good enough? आधा घंटा ठीक है जी। Is that good enough for you? और 2:30 बजे इंशाल्लाह। 2:30 2:30 Thank you. देख लेना, ख्याल रख लेना काशी साहब ये मैं इसकी दे दूँ।